Okay, this is the second part, and we are continuing this with the functions of commercial bank. Okay, so the second function is giving loans. Okay, how the commercial banks are giving the loans? Commercial banks are giving three different types of loans: short-term loans, medium-term loans, and long-term loans. Short-term loans are less than 1 year, medium term loans are 1 to 5 years, and long term loans are more than 1 year. Here you can see the demand loans are there, short term loans are there. So demand loans are there, which is for a specific demand, we have to fulfill that. So basically for that, cash credit means the credit which is provided by the bank through the credit cards and different ways the bank is going to provide you. So here giving loans, the if you want to write the notes in that, so you have to write the short term, medium term, and the long term, not like cash credit, demand loans and all this is not required. You have to write only the short term loan, medium term loan, and long term loan. Okay, long term loan are more than 5 years. Okay, the next function is overdraft. Overdraft is a facility which is provided on the current account, okay, and which is given to the businessman only. Because nowadays what happen, like if businessmen do not have that particular of sufficient amount in his bank account, अगर बिजनेसमैन के पास पर्टिकुलर अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में नहीं है और फिर भी अगर वो किसी को चेक देता है, और इन दैट चेक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल अगर किसी बैंक बिजनेसमैन ने 10 लाख रुपए का चेक किसी अपने पर्सन को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया, और अगर 10 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में नहीं है पूरे, और हो सकता है 9,70,000 9,80,000 रुपीज़ उसके बैंक अकाउंट में है, फिर भी 20,000 अगर कम है तो बैंक अभी भी चेक पास नहीं करता है. बट in the facility of overdraft, bank is giving this particular facility to the पर्टिकुलर बिजनेसमैन, दैट कि अगर उसके खाते में 10 लाख नहीं है फिर भी वो 10 लाख का चेक इशू कर सकता है. ओके, सो दिस इज नोन एज ओवरड्राफ्ट. इट इज एन एडवांस गिवन by allowing a customer to overdraw his current account up to a agreed limit. अंडरस्टैंड कि अगर 10 लाख रुपए का चेक भी आप दे सकते हैं अगर आपके बैंक अकाउंट में 9,80,000 रुपये भी हैं तो भी, और वो जो 20,000 रुपये बैंक एक्स्ट्रा आपके बिहाफ पे करेगा, द बैंक इज गोइंग टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन दैट. ओके, सो as soon as possible you have to pay that remaining 20,000 to the bank also. The another function is discounting of bills. Discounting of bills already we have discussed in class 11th business study also. Discounting of a bill, suppose there are two person. Okay, हम बात करते हैं कि दो पर्सन है, जिसमें अगर हम बात करें कि आप में से किसी बच्चों का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, किसका लें? ओके, शिवम और चर्चित का ले लेते हैं. ओके, देयर आर टू पर्सन, शिवम एंड चर्चित. ओके, सो शिवम ने कुछ गुड्स बाय किए हैं चर्चित से. तो चर्चित से जब गुड्स बाय किए तो शिवम ने बोला, फॉर एग्जांपल 5 लाख के गुड्स बाय किए हैं शिवम ने चर्चित से, एंड शिवम डू नॉट हैव दैट सफिशिएंट बैलेंस टू पे द अमाउंट. तो शिवम के पास उतना पैसा नहीं है, तो शिवम ने क्या बोला कि चर्चित, आई विल पे यू द मनी आफ्टर पीरियड ऑफ 3 months. दैट इज नॉन एज ट्रेड क्रेडिट, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. सो दैट 3 months जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के लिए वो ट्रेड क्रेडिट अलाउड हो जाएगा. बट in that scenario they will write bills. Okay, that is called bills of exchange. और bills of exchange में क्या होता है कि फिर चर्चित क्या करेगा, एक बिल बनाएगा और शिवम को बोलेगा कि उसके ऊपर साइन करो, और शिवम उसके ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस देके वापस चर्चित को दे देगा. बट चर्चित के लिए 5 लाख रुपए बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो चर्चित चाहता है कि ये पैसा उसको जल्दी से जल्दी आ जाए, बट शिवम इज गोइंग टू पे आफ्टर 3 months ओनली. सो वॉट चर्चित विल डू, चर्चित विल गो टू द बैंक. चर्चित बैंक में जाएगा और बैंक से जाके उसको क्या करवा सकता है, डिस्काउंट करवा सकता है. मतलब 5 लाख का चेक है तो हो सकता है उसको 4,80,000 रुपये बैंक रिटर्न उसको दे दे कैश में कन्वर्ट करके, और 20,000 रुपये वो अपना ऐसे अमाउंट डिडक्ट करे डिस्काउंटिंग का. सो ये भी एक फैसिलिटी बिजनेसमैन को मिलती है रिलेटेड विद द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. ओके, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन 11th क्लास recourse factoring and non recourse factoring. I hope everybody knows it. If you don't know, just ask me for that. Okay, we'll move to the next function, that is investment of fund. Sometime the banks provide you different kind of schemes, securities, other things in which you have to invest your money. Agency functions of the bank. Agency functions means like transfer of your funds, okay, from one place to another place, collection of funds on behalf of you, purchase and sale of shares, collection of dividends,
payment of bills. Okay, these are the different locker facilities, and all these facilities given by the banks to the customer. Okay, next is credit creation. Now this is very important, so there's this particular we are going to understand this topic into next video, because credit creation is the very much important function, and it's always asked in the examinations. Okay, so we will start this topic in the next video.